Hello everyone, I am Anuja Shrivastava and today I am just going to teach you the sixth part of class 8 chemistry, and the name of this chapter is carbon and its compound. In a previous video I already taught you about the carbon monoxide, which is a very poisonous gas, as well as it was also a very good reducing agent. Now in this video I am just going to teach you about the carbon dioxide cycle, CO2 cycle. So why it is known as a CO2 cycle? That means whatever the amount of CO2 is present in the atmosphere and how the CO2 is utilized by the things and how it is going to again accumulate in the atmosphere. So that is in the cyclic form, so that's why it is known as the carbon dioxide cycle. Okay, so as you all know that carbon dioxide, a gas that is present in our atmosphere, approximate 0.03 to 0.04%. Okay, now there is number of process those who are utilizing the CO2 gas, and why that, which type of the CO2 gas is utilized. Suppose carbon dioxide which is present in the atmosphere. Okay, now this CO2 is mostly utilized by the plants in the process of photosynthesis. That means green plants perform the photosynthesis and this CO2 gas is utilized. Now the plants which is utilize the photosynthesis, that dead organism and waste product, ये क्या करेंगे? It is also going to form the waste. Okay, and the डेड ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो देयर. सो इन दोनों की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है? इट इज़ जस्ट गोइंग टू फॉर्म द फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड एज वेल एज द फॉसिल्स फ्यूल. ये दोनों चीज़ें बनेंगी. अब ये जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है. ठीक है. अब ये जो फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से बर्न होके जो गैस निकल रही है वो कहाँ जा रही है? इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. बट वन मोर प्रोसेसेस आर देयर, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ respiration, whether the respiration by the plant as well by the animals and human, that also going to produce the carbon dioxide. That means in this form the cycle will be there. This CO2, it is utilized by the green plants in the process of the photosynthesis. This process it also release the waste product as well as the dead organisms. जो dead organisms और waste products हैं वो क्या बनाते हैं? They are going to form the fossils and the fossil fuels. These fossil fuels are utilized by the factories as well as in the vehicles. When these are burnt, they are just going to release the carbon dioxide as well as the respiration process also release the CO2 gas. So in this way this is just going into the cyclic form. Okay, now let us see the other topic of this chapter, and that topic is the greenhouse effect. What is greenhouse effect? So generally greenhouse effect क्या होता है? It is when the earth atmosphere become warm. That type of this effect is known as the greenhouse effect. But why it happens? तो normally क्या होता है? Some gases in the earth atmosphere absorb the infrared rays. अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है, it is just going to absorbs infrared ray. Now, अब जो अर्थ की that means the earth atmospheres absorb the infrared rays and keep our planet warm. Keep planet warm. Now, this is a normally general natural phenomena, and the greenhouse gases which are the common greenhouse gases are there.
they are carbon dioxide, then methane, CH4, as well as one more gas is there, that is the nitrous oxide. That means these are some common greenhouse gases, ठीक है. और these gases they are just absorb the infrared rays and keep our planet warm. But this type of process is the natural process, ये naturally होता है. But how it happens you must know. That means greenhouse gases because it absorb the infrared well. So कैसे ये greenhouse effect work करता है, you must know about that. So suppose this is the earth, okay, and this one is the layer of atmosphere, okay, and here the sun is there. Now what happened here, the sun emits heat rays in the form of the short wave infrared radiation which enters in the earth atmosphere. That means जो sun होता है वो जो short rays की infrared को रेज को प्रोड्यूस करता है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं. कौन सी वाली रेज एंटर करती हैं, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड. ये क्या हो रही हैं, दे आर गोइंग टू एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ here some greenhouse gases are there, so heat energy is absorbed by the earth surface which gets heated and re-emits a longer wavelength. अब ये क्या कर रही हैं, ये उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं और लॉन्गर वेव की जो इंफ्रारेड हैं उनको इमिट कर रही हैं, इमिट्स लॉन्गर वेवलेंथ. ओके, वेवलेंथ इंफ्रारेड. अब क्या हो रहा है, सम इमिटेड गैस हीट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इनटू द स्पेस. अब कुछ ऐसी होती हैं जो पास तो करती हैं लेकिन वापस कहाँ जाती हैं, दे बैक इनटू द स्पेस while some heat is absorbed by the carbon dioxide. कुछ तो स्पेस में चली जाती हैं and some heat is going to absorb by the CO2 which is the greenhouse gas. और अब क्या होता है, this traps the heat within the sun atmosphere and the earth becomes warm. और हमारी अर्थ को क्या करता है, वार्म करता है. But this is the natural process as I told you and it is also very necessary for the survival of the living beings. But nowadays what happened here, some industrial revolution and human activities, they are also going to release the greenhouse gases. That means industry as well as the human activities, these both things also going to release the greenhouse gases. And this emission is very fast as compared to the natural process. अब ये जो इंडस्ट्रीज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ कर रही हैं, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू द नेचुरल प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आवर एटमॉस्फेयर इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका एक्यूमुलेशन हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. एंड if it is going to increase day by day, so our planet what it will become, it will become a huge ball of burning. it is क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, our planet's temperature increase. एंड अगर ये इसी तरीके से इंक्रीज होता गया, so it is going to lead the global warming. दैट मीन्स क्या हो रहा है, इसको वापस से समझ लीजिए कि सन से जो शॉर्ट वेव की इंफ्रारेड रेज आ रही हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती जा रही हैं और हमारी अर्थ क्या कर रही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और सरफेस से कुछ लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड को इमिट कर देती है. अब जो सम इमिटेड हीट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर
और बैक इनटू द स्पेस, जो हम अब क्या हो रही हैं हमारे अर्थ से वो पास करके क्या हो रही है वापस स्पेस में चली जा रही हैं. बट सम इंफ्रारेड रेज आर देयर विच इज ट्रैप्स बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ट्रैप हो जा रही है. When CO2 is going to trap that infrared wave, it keeps our earth warm, which is very necessary for our survival. But because of some industries and the human activities, the greenhouse gases just remove in the atmosphere very fastly as compared to the natural way, and which increase the temperature of the planet, which increase the temperature of our earth and creates the global warming. जिससे हमारी अर्थ क्या होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा और अर्थ बिकम अ complete warm, and this process is known as the global warming. Okay, so this is all about the today's topic. Rest of the topic I will discuss in the next video. Till then, bye bye. Thank you.